Assalamualaikum. How are you, dears? Our talk is about measures of variability. We will discuss range, variance, and standard deviation. So, the learning outcomes of this session include: define the concept of variability in a dataset, calculate the range, variance, and standard deviation, interpret the results of these measures to understand data spread. सो हम क्या करेंगे, इसमें हम सीखेंगे कि हमने वेरिएबिलिटी को कैसे डिफाइन करना है और कैसे हम कैलकुलेट करेंगे रेंज को, वेरिएंस को और स्टैंडर्ड डिविएशन को, और इनका इस्तेमाल भी हम सीखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे वेरिएबिलिटी है क्या। तो वेरिएबिलिटी डेटा सेट का फैलाव है, स्प्रेड है अराउंड द मीन। मीन तो सेंट्रल पॉइंट है ना, तो मीन के इर्द गिर्द ये कितना फैला हुआ है, इसी को हम वेरिएबिलिटी कहते हैं और इसको हम मेजर भी करते हैं। सो द क्वेश्चन इज व्हाई वेरिएबिलिटी मैटर्स। So the variability actually tells us how different entries of data differ from each other. It helps to compare the data sets, one data set with others. So if we want to compare two data sets, variability helps a lot after the mean or the location of data. It also assists in understanding the consistency in data. If variability is less, then data is more consistent. If variability is more, then data is less consistent. So, as discussed earlier, we will talk about range, variance, and standard deviation. Let us first of all talk about range. So, range is the difference between highest and lowest values. If we simply subtract the lowest value from the highest value, we get the range. As we see in example, there are 4 entries in the data set. There are 5, 8, 12 and 20. So, we see that 20 is the highest value and 5 is the lowest value, and we simply subtract 5 from 20 and get the 15. So 15 is the range for this data set. Its strength is that it is easy to compute, and limitation is that it depends upon only two values. One is highest and other is the lowest. Now we come to the variance. So the understanding the concept of variance is very necessary. See, what is variance? Variance measures the average squared deviation of each number from the mean. सो आप देखते हैं कि अगर हम मीन से तमाम डिविएशंस को अगर ऐड कर लें, वी गेट द ज़ीरो. सो सम ऑफ टोटल deviation from the mean is always 0. To overcome this barrier, we actually first square all the deviations from mean and then add. In this way, we get the sum of all squared deviations. If we calculate its average, then we get the variance, or in other words, variance is the average squared deviation of each number from mean. Secondly, variance is the average of each distance from the mean squared. यानी अगर हम
तमाम डिस्टेंस जो मीन से हैं, यानी अगर उसमें किसी डाटा सेट में 5 वैल्यूज़ हैं तो पांचों का हम मीन से डिफरेंस निकालते हैं, उसको स्क्वायर करते हैं और फिर उन स्क्वायर्स का हम एवरेज निकालते हैं, तो ये वेरिएंस होगा। अब हम देखते हैं स्टेप्स क्या है वेरिएंस को कैलकुलेट करने के। सबसे पहले हम we will calculate the mean, then we will subtract the mean from each data point, then we will square the result and we will calculate the average. In this way we'll get the variance. Point 2 is example of variance. So we have the data set 1, 3 and 5. We calculate its mean, which is 3. Now we actually subtract mean from all the 3 and entries one by one. So 1 minus 3 is equal to minus 2, and again the second member of this data set is 3. So 3 minus 3, which is mean, is equal to 0. So third entry or member of this data set is 5. So we subtract mean, which is 3, from 5 and get 2. So now if we sum all the deviations, minus 1, 0 and 2, it is 0. So sum of deviations is always 0. If somewhere you get a sum of deviations other than 0, then there might be some fault in the calculation, as sum of deviation or total deviation from the mean is always 0, because the mean is the central point of the data. So for going towards the calculation of variance, what we do actually, we actually square all the deviation. So we square first deviation, which is minus 2, and get the 4, then the second one, which is 0, and get the 0, and third one we square the third one, which is 2, get the 4, and we add all 3 and get the 8. Then for calculation of average square deviation, we divide 8 by 3 and get 2.67, which is actually variance of this data set. This data set means 1, 3 and 5. So we go to the next, which is standard deviation. So standard deviation is the measure of how closely all data in a data set surrounds the mean. So अगर डाटा मीन के करीब करीब है तो स्टैंडर्ड डिविएशन कम होगी, अगर डाटा मीन से दूर फैला हुआ है तो स्टैंडर्ड डिविएशन ज़्यादा होगी। तो स्टैंडर्ड डिविएशन होती क्या है? इट इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस प्रोवाइडिंग ए मेजर ऑफ स्प्रेड इन द सेम यूनिट्स एज द डाटा। सो ये स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस है। वेरिएंस हमने पिछली स्लाइड में कैलकुलेट करके देखा है और इसका यूनिट भी वही होता है जो कि डाटा का यूनिट होता है, और हम स्टैंडर्ड डिविएशन के साथ कोई यूनिट नहीं लिखते हैं। अब हम आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। स्टैंडर्ड डिविएशन की एग्जाम्पल है, हम वेरिएंस वाली एग्जाम्पल को लेते हैं, क्योंकि उसी वेरिएंस का जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाती है। तो सारी कैलकुलेशन वैसे ही है जैसे हमने अभी की है। डाटा सेट में 135 है, उसका मीन 3 है, डिविएशन का सम 0 है, और सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिविएशन फ्रॉम द मीन 8 है, एवरेज स्क्वायर डिविएशन फ्रॉम द मीन 2.67 है, और स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए हम उसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो वी गेट 1.63. Thank you very much for being with me. See you in the next